स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में फंक्शन एलियासिंग का कॉन्सेप्ट देखा और फंक्शन नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा। नेस्टेड फंक्शन के कॉन्सेप्ट में हमने क्या आइडेंटिफाई करा कि हम किस तरीके से इनर फंक्शन की फंक्शनैलिटी को आउटर फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सम एब्स्ट्रैक्शन। अब ये जो कॉन्सेप्ट थे हमारे जो हमने पढ़े लास्ट वीडियो में, वो हमें हेल्प करेंगे एक नए टाइप के फंक्शन को समझने के लिए जिसको हम बोलते हैं डेकोरेटर फंक्शन। तो सबसे पहले नंबर हम समझते हैं डेकोरेटर फंक्शन का मतलब क्या है। So, see here, it is very important to understand the meaning of decorator here. डेकोरेटर फंक्शन क्या होता है? सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, है ना? इस ब्लॉक में मैं एक इनपुट देता हूँ और साथ में मेरे को एक आउटपुट निकलता है, ठीक है? तो यू कैन अज्यूम अ डेकोरेटर फंक्शन as this block, and this input will be the one function. Here output is also the function. But what is the difference between this input and this output function is this function is having a limited functionality. After applying the decorator function, we are having this function with some extended features. So what I should say, the decorator function is nothing. It take one function as an input and it give you the output, a function with some extended functionality. इससे क्या होगा? यदि ऑलरेडी प्रोग्रामर ने बहुत सारे फंक्शंस को लिख रखे हैं और हम चाहते हैं कि उन फंक्शन में कुछ एडिशनल हमें प्रॉपर्टीज ऐड करना है और हम एग्जिस्टिंग फंक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल बी राइटिंग अ डेकोरेटर फंक्शन जो हमें हेल्प करेगा एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को यूज करने में, एज वेल एज हम जो नया फंक्शन हमारा जो है डेकोरेटर हम डिफाइन कर रहे हैं उसकी हेल्प से नई फंक्शनैलिटी को अचीव करने में। सो लेट वी सी वन एग्जांपल फॉर द डेकोरेटर फंक्शन। सपोज we are defining one function here. This. So now I should write the decorator function here. देखिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं विच इज़ वेरी सिंपल फंक्शन, सपोज डिफाइन हेलो, and here I am passing one parameter, let I call the situation. What is the goal of this function is to just salute ऑन द बेसिस ऑफ सम सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, तो वो एक हम मान के चलते हैं यदि कोई व्यक्ति जो है बहुत नॉर्मल है बिहेवियर उसका, नॉर्मली मूव कर रहा है, तो इफ ही विल मीट यू एंड ही विल सी से गुड मॉर्निंग, and suppose the situation is good. So if he is having a good situation right now, means he is not tensed right now, so he will say good morning in a happy mode, fine. But this hello world program is defined here, and I want to add functionality for this function, and this only situation is giving you the good morning here. What I want, if suppose the situation is very tensed, so if the situation of that person is tense, तो वो good morning नहीं बोलेगा, he should say can you please help me. So how to do this with this simple hello function, and how to extend this functionality? So I have to define one function. I'm giving the name to this function as a decor. इस function का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है वो decor ही हो, है ना? So decor. One very important point here, in this function we will have at the working of decorator function, the Python virtual machine take the already defined function identifier as an input to the decorator function, है ना? तो ये हमें बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं कि दिस इज फंक, देयर इज वन फंक्शन वी आर यूजिंग, and for this func
when this Python virtual machine will be calling this decorator function, this hello will be passed to this function. अब हम क्या करते हैं, इस डेकोरेटर को डिफाइन करने के लिए हम नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसमें हम इनर को कॉल करेंगे. It should be very clear to everyone. This inner will have all the parameters that are available to the existing function. So suppose we are having right now, we are having the situation is here. So how to extend the functionality of this? What I will do, simply I will write here if situation is equal to bed. What someone say, print help me. And if the situation is normal that we are discussing, that is as per this hello function only, and I think I should say the situation also here, so that will more clarify the meaning of this function. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, if else everything is good and that particular situation is not there, and whatever may be the situation, if the situation is not bad, इसका मतलब सारी situations उसके लिए good है, हम ये मानकर चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, it should call the function, that function is passed, that is should be fun only, and the parameter is again that situation, because this is what the prototype of our previously existing function. So what we have done, we have extended the functionality of this function. लेकिन इस फंक्शन के कॉल होने पर किस तरीके से ये डेकोरेटर फंक्शन हमारा चलेगा और किस तरीके से डेकोरेटर फंक्शन के पास इस हेलो के कॉल को पहुंचाया जाएगा पाइथन वर्चुअल मशीन से, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू यूज @decor. हमें @ यूज करना पड़ेगा और साथ में क्या करना पड़ेगा, उस डेकोर फंक्शनैलिटी को हमें यूज करना पड़ेगा, है ना. सो व्हेन आई रन दिस कोड and call hello here, and suppose I am passing the situation here, um, very good. So when I run this code, run type object is not callable, just a minute. This should be hello. Okay, one more thing is there. What is happening? So we have written why this error, that should be very clearly understandable to everyone. अभी हमने देखा कि भाई एक्चुअली ये डेकोर फंक्शन, जब हेलो फंक्शन कॉल हो रहा है तो पाइथन वर्चुअल मशीन क्या कर रही है, इस डेकोर फंक्शन को जो ऑलरेडी बना हुआ है इसके लिए उसको रेफर कर रही है, उस डेकोर की फंक्शनैलिटी को चेक कर रही है क्या कोई अपडेट्स हैं वहां पर. सो इट विल एग्जीक्यूट फॉर द इनर, नॉट फॉर दिस, इफ द सिचुएशन इज लाइक बैड. और यदि बैड सिचुएशन है तो वो इसको रेफर करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, वो एग्जिस्टिंग फंक्शन जो है उसको कॉल करेगा. सो व्हाट वी नीड टू डू हियर, इस डेकोर फंक्शन के थ्रू हमें रिटर्न करना पड़ेगा किसको, इनर को, बिकॉज अल्टीमेट गोल of this function is to execute the inner function on the basis of the bad situation, on the basis of the situation. If that situation is bad, please call the upper one part, if part, if not, please call the existing function. So what is happening here, when I return this inner, so what is happening, this inner reference is passed here for the hello, and this hello is executing the inner instead of hello only. So when I run this code here, so can you see this? When the situation is hello very good, so it is giving you the this function output, that is a function called here. So this is the hello very good is the good morning very good. And instead of this, suppose we are having bad situation here like this. When I run this code, so can you see this? The answer is a please help me. What is happening? This decorator function. So let me check the execution here again. Here what is happening? When this hello function is called, this hello function will be passed in this decorator function with the help of this property @decor. So due to this, this hello will be passed here. When this hello will be passed here, the function definition is like this inner, and at the same time the situation will be passed as a parameter to the situation. So then the situation will be checked
if it is bad, so this code will be executed. If this situation is apart from the bad, for everyone the func situation will be called. But can you see this hello is passed for the func. So fun is equal to nothing, it's a hello. तो जो हमारे पास किसका रेफरेंस है, हमारे पास हेलो का रेफरेंस है। लेकिन इसको कॉल करने के लिए जब आउटर डेकोर फंक्शन इस इनर को रिटर्न करेगा, तभी वो हेलो फंक्शन के थ्रू यहाँ पर एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो हेलो जब एग्जीक्यूट कॉल कर रहे हैं हम, उस कॉल में इनर कॉल हो रहा है, उस इनर में हमारी सिचुएशन चेक हो रही है, इट इज अ बैड, इफ इट इज अ बैड सो यू आर गेटिंग द प्लीज हेल्प मी आउटपुट। और यदि ये हमारे पास बैड सिचुएशन नहीं है और गुड की सिचुएशन है हमारे पास, तो हमारे लिए जो आउटपुट आ रहा है आपका हेलो फंक्शन से आ रहा है। सो विद दिस एग्जांपल यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट what is the application of this decorator function. So let me take one more example here. The things will be more clear to everyone. Suppose we want to design, suppose we have already defined one function here. Okay. So we have defined one function for the divide. And we are passing two parameters here, a comma b. एंड समबडी पीपल न्यू कोई न्यू प्रोग्रामर है, नए प्रोग्रामर, उसने क्या करा, डिवाइड फंक्शन बनाया एंड ही हैज गिव यू द वैल्यू a डिवाइडेड बाय b. सो व्हाट इज हैपनिंग when you run this code and when you print and call the divide function, and when you're passing 10 comma 5, so you are getting output 2.0. It's a valid case because a divide function is working in the same manner as it has to work. But what the problem in this function is, if somebody call like this, like 10 divided by 0, can you see this? We are getting one exception, that is a zero division error. सो अब इस जीरो डिवीजन एरर जो है, दैट कैन बी हैंडल्ड, इसको हम पहले ही हैंडल कर सकते थे। हम यूजर को इस बात को बोल सकते थे कि भाई आपकी जो बी की वैल्यू है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। बट व्हाट इज हियर, द पर्सन हु इज ऑलरेडी डिफाइंड दिस function, we cannot change this, but we can extend the functionality of it. So here comes the role of the decorator completely in the picture. So let me see, for this same function we are defining one function, that is a update divide. हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, अपडेट डिवाइड, एंड दैट फंक्शन इज नथिंग, इट्स अ बेसिकली अ डेकोरेटर फंक्शन फॉर अस, है ना। तो डेकोरेटर फंक्शन में जब भी मेरे को कॉल करना है तो मुझे एक फंक कॉल करना पड़ेगा, यू कैन सी, और यही फंक जो डिवाइड है इसको हम मान के चलेंगे कि ये अंदर पास होगा एज अ पैरामीटर, है ना, अपडेट डिवाइड में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जो इनर फंक्शन है हमारे इस डेकोरेटर की फैसिलिटी, जो हमारी फैसिलिटी है उसको अवेलेबल कराएगा, है ना। अब इसमें इनर में मैंने आपको बताया था कि वही पैरामीटर्स पास होंगे जो आपके इस फंक्शन में पास हो रहे हैं, है ना। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, simply we are checking the condition. If b is equal to 0, what we will say, here we need to write print please don't use 0 for division. Otherwise, whatever the function is defined by the user, that's fine for us. So what I will do, so we will just write func, and what I need to do, I will be writing func and here a comma b. लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इफ आई एम टेकिंग द वैल्यूज पैरामीटर एंड रिटर्निंग समथिंग हियर, यहाँ पर हमने रिटर्न नहीं करी थी कोई वैल्यू, इसलिए हमने फंक को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा और प्रिंट कराया था। बट हियर वी हैव टू return the value of the function that is calculated. Fine. So we need to return the value of this function at the time of execution. और यदि ये ब्रेक होता तो हमें क्या करना था, यहां से सिंपली रिटर्न कर देना चाहिए था। फाइन।
अब क्या होगा यहाँ पर, as per the concept of decorator, we need to return inner. इस डिवीजन को यदि मुझे हैंडल करना है और मैं इस डेकोरेटर को यूज करना चाहता हूँ, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कॉल दिस डेकोरेटर, दैट इज अपडेट डिवाइड. So when I run this code and when I do the division by 0, so can you see here you are getting this, please let I remove this return here. So the answer will be in a more specific way. So can you see, please don't do 0, don't use लिखना चाहिए वहां पर, please don't use 0 for the division. तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर क्या हुआ है, इस फंक्शन ने इनर को रिटर्न करा है और इनर जब एग्जीक्यूट हुआ है तो उसने क्या करा है आपका, प्लीज डोंट यूज 0 फॉर द डिवीजन. अब मैंने डिवाइड को उसके प्रिंट के अंदर कॉल करा है, इसलिए नन आ रहा है. इफ आई विल डील लाइक दिस and run this code. So can you see, please don't use 0 for the division. Instead of this, if I'm using 5, so can you see the output is 2.0. So this is what the application of the decorator function. So for existing function, we are trying to define one more function that will be called when this existing function will be called, and as per the working of virtual machine, this divide function reference will be routed to this func only. Then this inner will be executed. On the basis of the execution of this inner, it will be checking the particular condition, otherwise it is returning the particular function. तो आपको इसमें एक बात याद रखना है कि यदि हम किसी फंक्शन से रिटर्न करा रहे हैं तो वी हैव टू रिटर्न द वैल्यू एज पर द लॉजिक, अदरवाइज हमारा जो आउटपुट है वो नहीं आएगा, है ना. और प्रीवियस केस में हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराई थी. सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेकोरेटर फंक्शन. अब जब हम डेकोरेटर फंक्शन के यूज करते हैं तो डेकोरेटर फंक्शंस में मल्टीपल फंक्शंस एक साथ आते हैं, वो एक के बाद एक डेकोर का भी यूज करते हैं. व्हेन यू विल डू द वेब डेवलपमेंट इन द जेंगो फ्रेमवर्क, तो आपको बहुत सारे डेकोरेटर्स डिफाइन करना पड़ेंगे, या बहुत सारे डेकोरेटर्स आपको बिल्ट इन मिलेंगे. जैसे कि आप ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन आपको चेक करना है, तो यूजर ऑथेंटिकेशन को आपको चेक करने के लिए केवल एक डेकोरेटर फंक्शन डिफाइन होगा जो आपके यूजर की आपके क्रेडेंशियल्स के डालने पर अपने आप उसका ऑथेंटिकेशन चेक करेगा. सो दीज आर द बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ decorator function, है ना. So in the next video we will be checking for the decorator chaining. So for this video it's all from my side. Thank you for watching.